जय भीम सरला दीदी, जय भीम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दीदी, गुड मॉर्निंग। मेरे कमेंट है ना सारे इंग्लिश में हो रहे थे, इसलिए मुझे लाइव एंड करनी पड़ी। मैं ठीक हूँ दीदी, आप बताओ आप कैसी हो, आपका तबीयत कैसा है? आप कैसे हो सरला दीदी? आपका भी देखा कल तबीयत खराब था। अभी ठीक नहीं है तबीयत, अभी थोड़ा आराम है। हाँ दीदी, जुकाम बुखार जिसको हो रहा है ना, जल्दी छोड़ नहीं रहा है। दवाई ले लीजिएगा जाके सरला दीदी। सुबह सुबह मौसम चेंज हो रहा है ना, दिन में धूप निकल जा रही है, वही नुकसान कर रहा है। थैंक यू दीदी, थैंक यू, दवा लाए हैं। अच्छा दीदी। बच्चे गए स्कूल?
जय भीम नमो बुद्धाय। पूजा सिस्टर हो या भाई, ये पहले बताओ। आप कैसी हो दीदी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? आपका खाना पीना हो गया है दीदी? नहीं भाई, खाना पीना नहीं हुआ है। अभी तो बच्चों को छोड़ के स्कूल से आई हूँ। सभी सम्मानित साथियों को हमारी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम। सेम टू यू भाई, आपको भी। और बताओ कैसे हो आप? थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। कैसे हो भारती भाई? मैं ठीक हूँ दीदी, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ भाई। और बताओ, चाय नाश्ता हुआ कुछ आपका? इसका कैमरा उल्टे लग रहा है क्या? आपका हुआ भाई? अब सही। इसका कैमरा कैसे उल्टे हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। थैंक यू सो मच भारती भाई, थैंक यू। आपका चाय नाश्ता हुआ कुछ? जब तक सभी चीजें नहीं होगा सस्ता तब तक नहीं पियेंगे चाय और नहीं करेंगे। अच्छा, तब तक वैसे रहोगे क्या? चाय वो पी लो भाई, आओ नाश्ता कर लो। थैंक यू भाई, थैंक यू सरला दीदी। सरला दीदी अभी ऑन है, गई है बच्चों को छोड़ने। जय भीम नमो बुद्धा। भारती भाई, भारती भाई, सरला दीदी आपको जय भीम नमो बुद्धा बोल रही हैं। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। मैं डायरेक्ट खाना खाता हूँ दीदी। कोई बात नहीं भाई, आज चाय पी लो। क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम। सरला दीदी, भारती भाई बोल रहे हैं। आपका तबीयत कैसा है सरला दीदी? सरला दीदी का भी तबीयत खराब है भाई। आपका नाश्ता हो गया है सरला दीदी? भारती भाई, चाय नाश्ता हो गया? सभी सम्मानित साथियों को हमारी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, नीला सलाम। जय भीम नमो बुद्धाय भाई। कॉलेज कब जाना है भाई? मैं अभी तो बताया दीदी।
कैसे हो भारती भाई आप? चाय पी लो भाई। सरला दीदी चाय पी लो। थैंक यू सो मच। मैंने शॉर्ट से लाइव चालू किया था, मेरे सारे कमेंट जितने भी आ रहे थे सब इंग्लिश में आ रहे थे। मैं भी ठीक हूँ सरला दीदी, भाई बोल रहे हैं चाय पी चुकी हूँ दीदी। अच्छा सरला दीदी, मैं तो वेट करती हूँ, बच्चों को छोड़ के आती हूँ, हस्बैंड जब आ जाते हैं तभी चाय वो पीती हूँ। तो अभी आए हैं। ठीक रहना चाहिए भारती भाई। मैं 9:45 से कॉलेज जाऊंगा दीदी। अच्छा भाई। तो खाना पीना कुछ खा पी लो। जाइए जाइए आप स्कूल भारती भाई। बिल्कुल भाई, खा पी लो, कुछ बना खा लो, जाओ आराम से आप। 9 बज गए। अभी मेरा सब्जी बन रहा है। अच्छा भाई, सब्जी बन रहा है, दाल चावल बना लिया हूँ। अच्छा भारती भाई, कितनी मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों को बताओ। बनाना, खाना, कॉलेज जाना, बहनों का सपोर्ट करना। जब मेरा सब्जी बन जाएगा उसके बाद मैं चला जाऊंगा। क्यों, खाना नहीं खाओगे? हम्म? खा लो, खा लो मेरे भाई आराम से। और आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है दीदी। मुझे कौन सी मेहनत करनी पड़ती है भाई बताओ। मुझे कौन सी मेहनत करनी पड़ती है? मेरे हिसाब से मुझे कुछ नहीं करना पड़ता। अभी मैं भी दूसरी जगह से दवा लेकर आऊंगी। हाँ दीदी, अच्छे से दवा लो सरला दीदी।
कल लाई थी दवा, उससे आराम नहीं मिला। ऐसा ना सरला दीदी, जुकाम जब होता है ना तुरंत दवा लो, तुरंत आराम नहीं मिलता है। जब जुकाम अंदर से थोड़ा पकता है ना तभी थोड़ी से आराम मिलता है। 1-2 दिन तो एकदम परेशानी लोग रहते हैं। जुकाम में तुरंत दवा भी नहीं खानी चाहिए। सबसे ज्यादा सिर दर्द हो रहा वो होगा जब जुकाम होता है ना, नाक जाम हो जाती है, भारी भारीपन होता है, तो सिर में ही दर्द होती है। विक्स उक्स लगा लो दीदी थोड़ा सा। मैं कल एक बात को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में था दीदी। कौन सी बात भाई बताना। किस बात की टेंशन भाई। आदि डालकर चाय पीजिए सरला दीदी। हाँ, था कोई बात। कौन सी ऐसी बात भारती भाई। आपको मैं बताया था। अभी चाय पीऊँ भारती भाई। ऐसी बात को नहीं सोचते हैं भारती भाई। जब सामने वाला नहीं समझता उस बात को आप क्यों ले रहे हो। उस बात को इग्नोर करो। ऐसी बात नहीं सोचते हैं। पूरा मुंह दर्द हो रहा है, दांत भी दर्द हो रहा है, पूरा सर दर्द हो रहा है, बोलने को भी दिल नहीं कर रहा है। जब स्वास्थ्य अच्छा नहीं होते सरला दीदी ने तो ऐसे ही होता है। फिर आप फोन ऑन रख के ऐसे अरेस्ट कर लो, परेशान ना हो सरला दीदी। इस जुकाम की वजह से सारा कुछ दर्द हो रहा है। हाँ, दर्द हो रहा है ना आजकल। कल तक थोड़ा सा आपको आराम मिलेगा, क्योंकि तुरंत जब शुरुआत होती है तो ऐसे ही होता है, गला भी खराश होगा, गले में भी दर्द होगी, ऐसे ही होता है। ठीक है दीदी। और क्या भारती भाई, जो चीज कोई ना सामने वाला समझे उस चीज को क्यों सिरदर्दी आप पालोगे, दूसरे का टेंशन अपने माइंड पे माथे पे रख के। अभी तो आपको फ्री होने की आवश्यकता है। मैं टेंशन इस बात को लेता हूँ कि मुझे मुझे भाई समझती है, इसका तबीयत ही ठीक नहीं रहता है। किसका तबीयत भाई बताओ। थैंक यू सरला दीदी, थैंक यू सो मच। बाकी को तो मैं सभी को अपने बहन की तरह सोचता है, लेकिन मुझे सिर्फ दिखाया के रूप में भाई बोलता है, और मैं सभी को समय आने पर साइड करते जाता। हम्म। भारती भाई देखो, साइड वाली अलग बात है। अगर जो चीज ना कोई समझे तो फिर क्या कर सकते हो आप। आपका एक फर्ज है सबके साथ सेफ्टी के साथ खड़े होना, कि आप सबकी रक्षा करते हो। जब नहीं कोई समझ रहा आपकी भावना को तो छोड़ दो।
मेरे लाइफ में ऐसे आके कोई बोल दे, मैं कभी इसके लिए किसी को नहीं बोलती हूँ कि नहीं उसको ब्लॉक मत करो, हटाओ मत, अब मैं उसको भाव दूँ, कभी ऐसा नहीं। मैं आपकी तबीयत को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित था दीदी। अरे नहीं मेरे भाई, मैं ठीक हूँ भारती भाई, टेंशन उन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ, आप सबके सामने हूँ, देखो ठीक हूँ। इलाज चलता है तो ठीक हो जाती हूँ, बीच बीच में ऐसे हो जाता है तबीयत खराब। मैं ठीक हूँ, मेरी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना आप लोग। हमको भी बहुत अच्छा लगता है, आप सभी भाई हमारी इतनी केयर करते हो। कोई बात नहीं भारती भाई, दीदी ठीक हो जाएंगी, बिल्कुल बिल्कुल सरला दीदी। जिसके कारण मैं किसी को बोलूँ वही लोग उसके पक्ष में हो, तब तो मुझे दुख पहुंचता है दीदी। बिल्कुल बिल्कुल भाई बिल्कुल। ऐसे लोगों को फिर बोलना ही नहीं भाई, क्यों बोलना जब नहीं बात की भावना नहीं समझ रहे हैं, तुम मत बोला करो, जाने दो। आपसे अगर सपोर्ट हो सके 10-5 मिनट सपोर्ट कर दो, उनको नहीं समझ में किसी को अगर आ रहा है तो उसको छोड़ दो। आज का समय भलाई का जमाना नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उस इंसान से कभी नहीं बोलूँगा दीदी। किससे भाई? किससे मेरे भाई बताओ? जिसको ना समझ में आए उसको मत समझना मेरे भाई। बिल्कुल बिल्कुल सरला दीदी, बात राइट है। कोई कुछ बोला है भारती भाई? हमें भी बताइए। आप सही बोल रही हो सरला दीदी, मैं आपको बताया था दीदी। अच्छा ठीक है भारती भाई, आज आना पहले कॉलेज से, फिर बात करेंगे।
जो जो इंसान भाई को ना समझे उसको बिल्कुल भूल जाना चाहिए मेरे भाई। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज तो मैं भारती भाई को बोलती हूँ। पर्सनल मैं आपको नाम भी बताया था, लेकिन नाम किसी को नहीं बताना। अरे नहीं मेरे भाई, भारती भाई ऐसी बात कभी नहीं है। देख लेना आप कभी। मैं आप आओ ना कॉलेज से, फिर बात करते हैं। कुछ लोग नहीं सरला दीदी, बहुत लोग हैं, और समझने वाला कुछ ही लोग हैं। बिल्कुल भाई बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल राइट है। हाँ यह तो सही बात है भारती भाई। टेंशन नहीं लेना कुछ किसी बात का, किसी बात का टेंशन नहीं लेना आप। दूसरे का सिरदर्दी अपने सिर पे क्यों। आपको देर हो जाएगा भाई, कॉलेज जाइए पहले। नहीं देर होगा दीदी, आप टेंशन नहीं लीजिए दीदी। जो अच्छे लोग हों रहेंगे ना, उसकी लाइफ में लोग नहीं नजर आते हैं मेरे भाई। बिल्कुल बिल्कुल सिस्टर, सही बात है। ये बात सरला दीदी राइट है। और जो गलत रहते हैं ना, उसकी लाइफ में हजारों लोग बसे रहते हैं। बिल्कुल। सिर्फ मुझे खाना खाना है, उसके बाद कॉलेज चले जाना है, तो लेट कैसे होगा। खाना खा लो फिर, क्यों नहीं लेट होगा। 9:15 हो गया। खाना खा लो भारती भाई। नहा वहा लिए कि सिर्फ कपड़ा चेंज करके चले जाओगे। खाना खा लो भाई, पहले खाना खाओ। अच्छे लोग का संख्या कम है और बुरे लोग को संख्या ज्यादा। सही बात है, सलादीन ने बात बिल्कुल राइट बोला भाई। अच्छे लोगों के साथ कोई नहीं होता है, अभी बुरे लोग हो देखो। वही तो मेरे भाई।
लोग बोलेंगे कि हम बाबा साहब के विचार पर चलते हैं, केवल वीडियो में चलते हैं, इंसान के साथ गलत करते हैं। बिल्कुल 100%। 100%। और कहा गया है कि यदि मूर्खों का संख्या बढ़ेगा तो ज्ञानी लोगों पर शोषण होगा। बिल्कुल भाई, बिल्कुल राइट। बिल्कुल सही बात बोल रही हैं सरला दीदी। सही बात मेरे भाई। और मैं आगे जाऊं या ना जाऊं, अपनी इज्जत सम्मान से रहना चाहती हूँ। देखो बहन, बिल्कुल बिल्कुल, हम पैसे ही कमा के और सब कुछ करके क्या करेंगे जब हमारे समाज में इज्जत ही नहीं रहेगी। वो सब व्यर्थ है। समझे। और ऐसे लोगों के साथ ही बुरा होता है, तब हम लोग सिर्फ जात के नाम पर हल्ला करते हैं। बिल्कुल जात के नाम पर हल्ला करते हैं, ये बात बिल्कुल राइट है भाई। बिल्कुल सही बात मेरे भाई। मेरे पापा हमेशा एक कहावत सुनाते थे जिसका नाम है बची खुची इज्जत। सही बात भाई। मैं अपने पापा को विश्वास दिलाया हूँ कि मैं ऐसा काम कभी नहीं करूँगा जिसके कारण आपको अवहेलना हो। बिल्कुल बिल्कुल राइट। सोच अच्छी है। 100% भाई। बिल्कुल सही मेरे भाई, ऐसा करना भी नहीं। करना तो दूर की बात है, मैं सोचता भी नहीं हूँ दीदी। बिल्कुल राइट भारती भाई, हम लोग जानते हैं आपको, ऐसी बात नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ दीदी। बिल्कुल भाई बिल्कुल, आप जाओ, खाना खाओ और जाओ टाइम से। टाइम से जाओ। जाओ भारती भाई, आप खाना खा लो और जाओ कॉलेज। जब आ जाना तो एक मैसेज कर देना।
हम लोग कुछ अच्छा करेंगे तो वहाँ लोग देखने नहीं आएंगे। अगर जहाँ झगड़ा होता होगा ना, वहाँ हजारों लोग की संख्या जुड़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल दीदी, सही बात है। संख्या भी जुड़ जाएगी, वहाँ सब लोग ऐसे होते हैं एक दूसरे के साथ। भारती भाई, बहुत अच्छी बात। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा दीदी जी। बिल्कुल भाई, आप अपना ख्याल रखिएगा। खाना पीना खा के जरूर जाइएगा, बिना खाना खाए नहीं जाइएगा। बाय बाय भाई, बाय बाय। बाय बाय। थैंक यू भारती भाई, बाय बाय। हम लोग अपना ख्याल रखेंगे भाई। बाय बाय, बाय बाय। हमारी लाइफ में जो आते हैं, जो समझते हैं ना, उन्हीं से बात करते। जो नहीं समझते, बिल्कुल उनसे मैं बात ही नहीं करती। बिल्कुल दीदी, ऐसे लोगों से बात करने से क्या फायदा जो किसी की भाव नहीं समझे। अपना सपोर्ट करो और निकलो। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू शर्ला दीदी, थैंक यू। मैं जल्दी किसी से बात नहीं करती, सपोर्ट करके चली जाती हूँ सभी की लाइफ में। बात ही क्या करना दीदी। बात उसी से करते हैं जो अपने जैसा समझे। हमारे एक भैया नाराज हो गए थे, हंसी मजाक के चक्कर में। विशाल भाई आते हैं, वही मजाक कर रहे थे। मैंने उनको बोल दिया मेरी लाइफ में आना, पर मजाक हमें नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी, इसीलिए मैं उनसे नहीं जुड़ती। ये बात राइट है। मजाक मजाक की तरह होता है।
हमारे रमेश भैया गुस्सा हो गए थे, 2 दिन नहीं आए थे लाइव में। ये चीज मुझको भी नहीं पसंद सरला दीदी, मैं इसीलिए ना मैं आपकी लाइव में बोली नहीं उस दिन। मैं सोचा मैं बोलूंगी अच्छा नहीं है, मैं तभी नहीं बात करती। आपने उनसे कभी बात करते हुए देखा मुझे? कभी भी नहीं, मैं नहीं करती ऐसे लोगों से बात। मुझे ज्यादा ऐसे नहीं बकवास पसंद लगती है। मैंने बोल दिया कि भाई हमें मजाक नहीं चलेगा, मेरा भाई ना छूटे, आप लोग छूट जाओ सब, और भाई को नहीं छोड़ना हमें। बिल्कुल बिल्कुल दीदी बिल्कुल। रमेश भैया कौन सी आईडी है बताना, रमेश भैया की क्या आईडी है? भैया वीडियो थोड़ी बनाते हैं, केवल सपोर्ट करते हैं हमें। अच्छा दीदी, जो राठौर राठौर नाम की आईडी है, उनके भी वो भी वीडियो नहीं बनाते हैं, राठौर रमेश राठौर। हाँ सही कहा शर्ला दीदी, मैं जानती हूँ भैया को। भगवान बुद्ध की फोटो लगी है, हाँ हाँ मैं जानती हूँ उनको। उनकी एक या दो वीडियो बन रखी है उनके चैनल पे, एक शायद कि दो, और पोस्ट रखे हैं, डाल रखे हैं। भैया गुजरात से हैं, कहाँ से? बड़े भैया की वजह से मजाक करने लगे थे कल, बड़े भैया फोन करके बोल दिया कि मजाक नहीं करना उनकी लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू दीदी। कुछ उल्टा भी बोल देते हैं ना, उनको बोलने का तरीका भी नहीं है, वही तो कह रही हूँ, मैं जानती हूँ सरला दीदी, उल्टा बहुत कुछ वो बोलते हैं। मजाक इतना अच्छा नहीं लगता है। मैंने तो सोनू भैया की लाइफ में वो जाते हैं, मैंने कितनी बार उनको बोल दिया। एक दिन तो मैं गुस्सा हो गई थी, मैंने कहा बदतमीजी अच्छी नहीं लगती है। उन्होंने बोला बदतमीजी कौन कर रहा है? मैं कहा लैंग्वेज का जब चूज करते हो ना, पहले सोच समझ के किया करो। मेरी तो उनकी उनकी एक बार हो ही गई थी। ऐसे लोगों को मैं भी नहीं पसंद करती सरला दीदी, सच बता रही हूँ। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। कल बोल दिया सॉरी, अब नहीं करना हमें ऐसे। बिल्कुल मुझे भी अच्छा नहीं लगता, सपोर्ट करो सपोर्ट की तरह, बदतमीजी नहीं।
मैंने बोल दिया मेरी लाइफ में ऐसे नहीं करना, जितना मर्जी जहाँ करो। बिल्कुल, जिसको नहीं पसंद है वहाँ नहीं पसंद है। मुझे टेंशन की वजह से तबीयत खराब हुई है। तो फिर टेंशन क्यों लिया दीदी इतनी? ऐसे लोगों की टेंशन क्यों? जवाब दे दिया करो कि हमारे लाइफ में आओ, ये सब नहीं चलेगा। शराफत से कमेंट करो और जाओ। एक फौजी भाई हैं, वह भी बहुत मानते हैं। बिल्कुल दीदी बिल्कुल, ये तो एक बनाने वाली बात होती है। एक दूसरे को मानेंगे तभी मानेंगे, समझने की बात होती है। इंदौर के रहने वाले हैं, वह कोई गलत आता है तो तुरंत हटा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वह दिन में नहीं आ पाते हैं, रात में आते हैं। अगर दिन में आते तो वो तो तुरंत हटा ही देते हैं। होना ही ऐसे चाहिए सरला दीदी। इसलिए मैंने बोल दिया गलत कमेंट नहीं करना, नहीं तो फिर लाइव में नहीं। बिल्कुल। उन करते हैं जो तो बातें ऐसे बोलते हैं, अजीब सा लगता है, देखने वालों को गुस्सा आता है। दीदी मैं भी जा रही हूँ, थोड़ा खाना बना लूँ, अभी खाना नहीं बनाई हूँ। बिल्कुल बिल्कुल दीदी जाओ, आपका कंप्लीट भी हो गया है। आप जाओ और खाना बना लो और खा लो। फिर आप जब लाइव चालू करेंगी तो मैं आऊंगी। लाइव कब चलाएंगी सरला दीदी? अपना ख्याल रखना दीदी। ओके दीदी, आप भी, आपका भी तो स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। 2:30 पर ठीक है दीदी, आऊंगी। आऊंगी दीदी 2:30 तक। थैंक यू सो मच। बाय बाय सरला दीदी, बाय बाय।
बाय बाय, थैंक यू दीदी। अपना ख्याल रखना, दवाई खा लेना टाइम से आप भी। बाय बाय, बाय बाय दीदी, बाय बाय। बहुत बहुत धन्यवाद शर्ला दीदी।
जय भीम नमो बुद्धाय बड़े भैया जी। सुरेंद्र भैया जय भीम नमो बुद्धाय, स्वागत है आपका। कैसी हो बहन? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भैया, आप बताओ आप कैसे हो? तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है भैया, आप बताओ आप कैसे हो? हम भी ठीक हैं सिस्टर जी। ओके भैया, ठीक ही रहना चाहिए। ड्यूटी जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ बहन। ओके भैया, ड्यूटी जाइए। खाना हो गया आपका? हाँ भैया, हमारा सुबह नाश्ता हुआ, खाना भी तो नहीं हुआ है। नाश्ता क्योंकि दवा खानी होती है ना, तो वैसे नहीं खा सकते हैं, तो फिर हमने थोड़ा सा रोटी सब्जी खाया है। अब 2 ढाई 3 बजे हम लोग खाना खाएंगे। आपका हुआ भैया जी? जी हाँ सिस्टर जी। ओके भैया। हम्म। थैंक यू भैया, थैंक यू।
जय भीम भाई, जय भीम। मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? बीपी लो है भाई, नींद नहीं खुल रही है। पी लिया भाई, नींबू पानी उनी सब पी के देख लिया। नींबू पानी भी पी लिया, एक चॉकलेट भी खा लिया। अपने आप ही सही होगा, ऐसे नहीं होगा। सोई तो थी, तब से तो सोई थी, अभी तो उठी हूँ। अभी उठी हूँ भाई, तभी से सोई थी, जब से लाइट चल रही तब से सोई थी। अभी जस्ट उठी हूँ। आपका खाना पीना हुआ? अभी नहीं हुआ। कब होगा भाई? 1 बज के कब होगा? काम पर हूँ। अच्छा, कैसी हो दीदी जी?
जय भीम रवि भैया जी। मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ आप कैसे हो भैया? रवि भैया बताओ आप कैसे हो? थैंक यू भैया, थैंक यू। बाय बाय। कैसे हो ये तो बता दो। खाना हुआ। मैंने सवेरे नाश्ता किया था, दवाई खाया था, खाना भी नहीं खाया है। तब से तो सोई हूँ। खाना बच्चे आएंगे तब सब साथ में खाएंगे। तबीयत ठीक नहीं लग रही है दीदी आपकी। तबीयत ठीक है रवि भैया। बीपी ना, मुझे लग रहा है मेरी बीपी लो है। जब मेरी बीपी लो होती है ना तो मुझे सुस्ती बहुत आती है, नींद आती है, आंख नहीं खुलती है। मेरी यही पहचान है। मेरी जब बीपी लो होती है तो बस मुझे नींद ही आती है बहुत ज्यादा, और चक्कर आता है। ऐसे ही लग रहा कुछ। दवा खा लिया है रवि भैया। दवा सवेरे खा लिया था, 9 9:30 बजे से पहले पहले। पानी ज्यादा पियो फिर।
दे दे नींबू पानी पियो रवि भैया, नींबू पानी पी लिया। सिर के दर्द की वजह से देख रहे हो नसें ये जो होती है ना ये निकल जाती है, प्रॉब्लम होती है फिर। कभी कभी बिल्कुल नहीं निकलती है, कभी कभी ज्यादा दर्द होता है ना तभी एकदम नसें बाहर आती है। आंखों की तभी सूजी है। अब अचानक अचानक से ऐसा होता है। ओके रवि भैया, बंद ही करेंगे, बंद करेंगे रवि भैया, सो जाएंगे। सो जाओ। ओके भाई, बाय बाय सभी को।